Okay. So in today's online session, we are going to discuss some of the topics and some of the things in trigonometry that related to the formulas for which we have already discussed in the classes. So in the classes we have completed allied angles, compound angles, submultiple angles, and multiple angles, right? And we have done our basic few questions on those things as well. So in the session today, we'll look at some more usage of those formulas and questions pertaining to them, common questions pertaining to them, right? So let's say we start with the first topic for today being solving equations of sine and cos. The first topic for today would be solving equations of sine and cos equations, which is like one of the common questions that we have in trigonometry is where we will be given equations in the form of this, that sin x plus sin y is equal to sum a, and cos x plus cos y is equal to sum b. Okay, we'll be given two equations of this form, sin x plus sin y is equal to a, and cos x plus cos y is equal to b. And then using these two formulas, you would be asked to find the value of, well, either value of something like this: sine of x plus y, cos of x plus y, tan of x plus y. Could be their half angles as well: sine of x plus y by 2, cos of x plus y by 2, tan of x plus y by 2, or even the negative components as well: sine of x minus y, cos of x minus y, tan of x minus y, or their half angles: sine of x minus y by 2, cos of x minus y by 2, tan of x minus y by 2. So we could be asked to find out the value of any of these 12 entities. Okay. Now, obviously, you will be given one of them or one of the 12 for a particular question, not all of them. So how do we go about doing that? Okay. So for alpha plus beta relations, let's say case one, we take for alpha plus beta relations, what we do is in both equation 1 and equation 2, we apply transformation formulas. Okay. So sin x plus sin y is like sin c plus sin d. We apply transformation formula. So this will become 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 is equal to a. Same with the second equation, cos c plus cos d. So 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 is equal to b. And step 2 is now we divide the two equations. Okay, we divide the two equations. So that gives us tan of x plus y by 2 is a by b. Is everyone clear till here?
Yes, sir. Okay, great. Yes, So now, once we have the value of tan of x plus y by 2, so let x plus y by 2 be a. So in that case, x plus y will become 2a. So this then converts to the transformation questions, conversion questions, in the sense that now we know the value of tan a is a by b. Now, once we know that tan a, once we know tan a, we can find sine and cos with the triangle method. Sin a cos a आ जाएगा triangle method से, and x plus y relations and sin 2a cos 2a tan 2a. For this, we apply the multiple angle formulas. Okay, sin 2a is 2 tan a by 1 plus tan square a. Cos 2a is 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. So all the formulas that we have done for like multiple angles, and tan 2a directly is 2 tan a by 1 minus tan square a, 1 plus. So we apply these multiple angle formulas to get the value of sine of x plus y, cos of x plus y, tan of x plus y. Is everyone clear with this? So that is how we solve for the first part, alpha plus beta relations. Then case 2, for alpha minus beta relations. So what we do is we take both equations 1 and 2, square and add. We square and add them. So when we square the first equation, we'll get sine square x plus sine square y plus 2 sine x sine y is equal to a square. The second equation would be cos square x plus cos square y plus 2 cos x cos y is equal to b square. And then we add them up. So sine square x plus cos square x is 1. Sine square y plus cos square y is 1. And we get plus twice of cos x cos y plus sin x sin y is equal to a square plus b square. सर वो 2 cos x के बाद क्या लिखें? क्या? लाइन में 2 cos x के बाद क्या लिखा है? ये इक्वल cos टू y है, cos y, cos y. सर यहाँ पे साइन ए कॉस से आप ट्रायंगल मेथड से निकालने के लिए बोले। क्या हर्ष? सर आपने स्पेसिफाई थोड़ी किया एंगल ए कौन से कोऑर्डिनेट में है। सर आपने स्पेसिफाई थोड़ी किया एंगल ए कौन से कोऑर्डिनेट में लाई जाता है। हाँ, दिस इज नॉट, ये जो अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, दे आर नॉट, मतलब यू डू देम बाय दिस एंड जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इट. ठीक है, जैसे tan a का वैल्यू हमेशा a by b आएगा. इट डजंट, द क्वाड्रेंट वाला पार्ट इज ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस. ओके. ओके सर। हाँ, sin a cos a sin 2a cos 2a tan 2a ये जब निकालोगे देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द क्वाड्रेंट. ठीक है, एंड यूजुअली द क्वाड्रेंट वुड बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. तो अभी के लिए वी आर जस्ट डिस्कसिंग द मेथड. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन इक्वेशंस. या, सो नाउ कंटिन्यूइंग, cos x cos y plus sin x sin y ये क्या बन गया? So we get cos of x minus y is a square plus b square minus 2 whole divided by 2. Right. So this would be like, we have found out the value of this cos of x minus y. So from here,
To find sine of x minus y and tan of x minus y, we apply triangle method. And to find the half angles, sine of x minus y by 2, cos of x minus y by 2, and tan of x minus y by 2, we apply submultiple angle formulas. Submultiple angle formulas. Because essentially, just like we did in the previous part, इस case में we'll take x minus y as 2b and x minus y by 2 will end up becoming b. Or you could also do it as this. We can just take it as an angle A, and then x minus y by 2 will become a by 2. So सब multiple angles की तरफ जाएगा ये, because a से a by 2 में जाना है. Is everyone clear on this? सर स्टेप 1 में यहाँ पर वो 2 cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई में वो साइन एक्स और साइन वाई कैसे हटा? कौन से वाले में? और दूसरे वाले में जिसमें आपने स्क्वायर एंड ऐड किया, हाँ, स्क्वायर एंड ऐड किया. इसमें साइन एक्स और साइन वाई कैसे हटा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया ना. ब्रैकेट में है सम ऐड करने के बाद टू हाँ, तो कॉस ये तो एक्स। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी हो गया. ओके सर। ठीक है. कॉस ए हाँ कॉस सर बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे आ गया. ठीक है। ओके. So on this method, let's try out a question. Hmm. Let alpha and beta be such that pi is less than alpha minus beta is less than 3 pi. Okay. Now, if sine of alpha plus sine of beta is minus 21 by 65 and cos alpha plus cos beta is minus 27 by 65, find cos of alpha minus beta by 2. Find cos of alpha minus b by 2.
So we're asked to find an alpha minus beta relation. So use the second method. minus 3 by root over 130. Minus 3 by root over 130. So we square both the sides and add. तो directly formula लगा दो. Cos of alpha minus beta by 2 will be like a square. So 21 by 65 whole square plus 27 by 65 whole square minus 2 whole divided by 2. You know. And फिर अपने को cos of alpha plus alpha minus beta चाहिए. So we apply the formula that 1 plus cos of alpha minus beta would be 2 cos square alpha minus beta by 2. तो यहाँ से we'll get the value of cos of alpha minus beta. अच्छा cos of alpha minus beta by 2 ही तो निकालना था. ठीक है एक बार डायरेक्टली सीधा फॉर्मूला से ही मिल जाएगा ये तो. अल्फा माइनस बीटा ही तो बाई 2 ही तो निकालना. ये cos ऑफ x माइनस वाई आएगा. वही मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया कि ये cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा आएगा. And then we apply the formula 1 plus cos of alpha minus beta is 2 cos square alpha minus beta by 2. हाँ तो यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें प्लग इन कर देना है and simplify. You get the value as minus 3 by root over of 130. Can you complete the question? अच्छा after that अगर थोड़ा next. सा ऊपर करिए एक बार, हाँ थोड़ा सा ऊपर करिए एक बार. हाँ श्योर. तो खाली कैलकुलेट करना रहेगा वैल्यू थोड़ा सा बस उसका ही वो है. Okay. Next topic.
Values of Trigo ratios at 18 degrees, 36 degrees, 54 degrees, and 72 degrees. So this will be the next topic that we discuss, so that in the next class we can discuss the topic of standard angles. So let's say if we consider 18 degrees is equal to A, so how much would be 5A? Sir, 90 9. 90 degrees हो जाएगा. And in that case, we can say that 3A is equal to 90 minus 2A. Yes, sir. Okay. Now, let's say we take cos of both sides. So that will be cos of 3A is equal to cos of 90 minus 2A. But cos of 90 minus 2A, how much will be cos of 90 minus theta? 9 theta. So Sin sin 2A. 2A. Cos 3A, the formula we did in the class is 4 cos cube A minus 3 cos A. And sin 2A, the formula is 2 sin A cos A. So we can take a cos A common from the left hand side and it gets cancelled off with the cos A on the right hand side. So we are left with 4 cos square A minus 3 is 2 sin A. But then this cos square is like writing 4 minus 4 sin square A minus 3 is 2 sin A, which ends up becoming a quadratic in the form of 4 sin square A. We continue from here. 4 sin square A plus 2 sin A minus 1 is equal to 0. Is everything clear till here? हाँ सर. Great. Now this is a quadratic, but this cannot be middle term factorized. So in order to solve this quadratic, we apply Sridhar Acharya. So it will be minus b plus minus root over of b square minus 4ac. So 4 into 4 into minus 1. तो ये plus हो गया. Divided by 2a. So 2 into 4. So this is minus 2 plus minus 4 root 5 by 2 into 4. 4 तो ये एक्चुअली 2 होगा ना, रूट 2 के बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा. 4 का एक 4 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया एज अ 2 and then this 2 and this 2 gets cancelled off. So we'll be left with minus 1 plus minus root 5 by 4 is the value of sin A. Now out of the plus and the minus sign, which one should be the value of sin A? Sir, plus root 5 minus Sir, 1. plus Plus. Okay. Sin 18 is an angle in the first quadrant. And in the first quadrant, sin will be positive. So sin 18, the value is root 5 minus 1 by 4. Sin 18 degrees is root 5 minus 1 by 4. Now, once we know sin 18, find cos 18. Find cos 18. Sir, its conjugate. Try, grow. I'll just be back in a minute.
सर आप म्यूटेड है। So anyone cos 18? सर होल रूट रूट ओवर 10 5 प्लस 2 रूट ओवर 5 ऑल ओवर 4 सर। ठीक है, वैसे ही आएगा. So इसके लिए again we'll do the use the triangle method, that once we have sin 18 we'll use triangle method to find cos 18, which would be if we consider this angle is 18 degrees, so sine is, this would become root 5 minus 1, this will become 4. So this side will end up becoming root over of 16 minus root 5 minus 1 whole square. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो. So 16 minus of 5 plus 1 minus 2 root 5 whole square. So that will be root over of 10 minus plus 2 root 5. ठीक है. So cos 18 is whole root 10 plus 2 root 5 by 4. Does everyone understand this? सर ये cos 18 का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 से नहीं आता। हाँ, वही तो कर रहे हैं ना. ट्रायंगल मेथड वही तो होता है. cos स्क्वायर इज रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर. वही तो ट्रायंगल मेथड होता है. ट्रायंगल मेथड में अपने एग्जैक्टली वही तो चीज करते हैं. ठीक है. यस सर। Okay, so now this was 18 degrees. Now let's proceed for 36 degrees. Okay, this was part one of it. Now the second part of it. So again, if 18 degrees was A, so 36 degrees would be 2A. And then we know from the formulas 1 plus cos 2A is 2 cos square A. Okay. And cos 18, abhi we have found out there would be this. So we just plug in the value of cos 18 over here. इसमें plug in कर दिया. So this will give us 1 plus cos 2A is twice of 10 plus 2 root 5 divided by 16. और ये cancel होके 8 हो गया. And then this one moves over. So cos 2A is 10 plus 2 root 5 minus 8 by 8, which is 2 plus 2 root 5. 2 plus 2 root 5 by 8. So cos 36 is root 5 plus 1 by 4. Okay, that is the value of cos 36. And now that we know cos 36, try finding the value of sin 36. So when we solve in the same way, sin 36 degrees will come out to be root over of 10 minus 2 root 5 whole divided by 4. So these are 4 standard angles that you need to remember: sin 18, cos 36, sin 36. Okay. And then for the other two angles, 54 and 72, we just use complementary relations, that sin 18 will be the same as writing cos 72. cos 72. Cos 18 will be the same as sin Sin 72. Sin 36 will be the cos 36 will be the same sin as 54. sin 54, and sin 36 will be the same as cos 54. So that way we get the value of sine and cos at 18 degrees, 36 degrees, 54 degrees, and 72 degrees. सर ये आप 1 प्लस कॉस 2A इक्वल टू 2
cos square ही लिखे हैं ना? हाँ, 1 plus cos 2a is 2 cos square a. ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला. सर इसका फॉर्मूला मतलब वैल्यू याद करना पड़ेगा. Yes, brother. Remember, I had said in the class there are only about 60 formulas and 60 entities that you need to remember about it in the chapter. तो वो नंबर तो रीच करना पड़ेगा ना. Yes. Okay. So now let's look at a couple of very simple questions based on the application of the results. Got one. Question. Find the value of cos 12 degrees plus cos 84 degrees plus cos 132 degrees plus cos 156 degrees. How should we proceed in this? सर सब डिफरेंस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. Okay, well, the simplest way of solving this would be, let's say we pair the smallest angle with the smallest angle with the largest angle. Cos 12 plus cos 156 plus cos 84 plus cos 132. Okay. Now pairwise apply cos C plus cos D. What is the formula for cos C plus cos D?
2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2, and same thing over here. So 2 cos 84 plus 132 by 2 into cos of 84 minus 132 by 2. So 2 cos. How much would be 156 plus 12 by 2? Sir, 84. पेयरिंग गलत कर दिया क्या? 12 132, अच्छा 12 132 करना था। कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा? 84 into cos of 156 minus 12 by 2. Minus 72. 72 आएगा ना? हाँ सर, minus 72. कॉस में माइनस नहीं होता। हाँ सर सर और 2 cos सेकंड एंगल क्या होगा? ये 132 प्लस 84 by 2। सर 108. 108, एंड ये आ जाएगा cos of 132 minus 84 by 2। 24। कितना? सर 24। हाँ सर। हम्म 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 108 9 plus 18, 90 plus 18, and 84 24। एक काम करो, आई थिंक वी हैव मेस्ड अप द पेयर्स। ओके, यस वी हैव एक्चुअली। ऐसे भी हो जाएगा, बट देन इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। कोई पॉइंट नहीं है। वी हैव आई have actually, sorry, my bad, I have messed up the pairs. We had to pair alternate सर term. फर्स्ट और थर्ड को पेयर कीजिए और टू सेकंड और फोर्थ को। हाँ हाँ, वही alternate को pair करना था। My bad everyone। Plus cos 132 and cos 84 plus cos 156, तो ये ज्यादा इजीली अच्छे से पेयर होगा। तो इसमें अब अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos, हाँ 12, सारा का सारा स्टैंड एंगल बन गया, बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 12 माइनस 132 बाई 2 प्लस 2 cos ऑफ 84 प्लस 156 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 84 माइनस 156 बाई 2। हाँ अब सही है। सो ये आ जाएगा 2 132 प्लस 12 144 बाई 2 72, 132 माइनस 12 120 बाई 6 cos 60, सारा स्टैंड एंगल बन गया ना, प्लस 2 cos 156 प्लस 84 240 प्लस बाई 2 हो गया cos 120 इंटू कॉस ऑफ 84 माइनस 56 72 बाई 2 cos 36। बस अब वैल्यू प्लग इन कर दो, आंसर आ जाएगा। हाउ मच इज cos 72? तो √5 माइनस 1/4, हाँ सर, so twice of √5 minus 1/4। now how much is cos 60? 1/2 half. हाफ, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। प्लस, अच्छा how much is cos 120? cos 120 is minus half, so हो गया माइनस ऑफ 2 इंटू हाफ इंटू cos 36 का वैल्यू √5 प्लस Root 1 5 plus 1/4. बाई 4, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। सो इफेक्टिवली व्हाट वी गेट इज √5 माइनस 1 माइनस √5 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 4, तो ये √5 कैंसिल हो गया, -2/4, we get the answer as minus half. The value of this expression is minus half.
Is everyone okay with the question? Yes, sir. The next question on this. Prove that cos 36 into cos 72 into cos 108 into cos of 144 degrees is equal to 1 by 16. Find the value करके भी कर सकते हैं, but ठीक है. Prove this. So we start with left hand side. Cos 36, cos 72. तो सही है. अच्छा, what can you write cos 108 as? 90 plus 90 18. plus 18 into cos 144 as 90 plus 54. 90 plus 54. What is the value for cos of 90 plus theta? Allied angles. तो cos 36, cos 72, it's like n is 1, तो चेंज हो गया. सेकंड क्वाड्रेंट cos is नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा. बट दोनों का नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी sin 18 एंड sin 54. अब वैल्यू प्लग इन कर दो, सिंप्लीफाई. So cos 36 is root 5 plus 1 by 4 into cos 72 sin 18. एक तरह से स्क्वायर ही हो गया. This is like root 5 plus 1 whole square into root 5 minus 1 whole square whole divided by 4, 16, I mean 2 to the power 8, 256. अब फिर ये हो जाएगा रूट a प्लस बी a माइनस बी, तो 5 minus 1, 4 का स्क्वायर 16 by 256.
which is 1/16. Okay, next question. A couple of questions from the assignment sheet that a lot of people have asked me as doubts. The first one in this was, if a plus b plus c is 3 pi by 2, then we are asked to find the value of, or we have to find the value of cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. Okay. A lot of people have asked me this. So I'll discuss the method of solution. So what we do in cos 2a is we take the first two terms, apply cos c plus cos d. So I got 2 cos 2a plus 2b by 2 into cos of 2a minus 2b by 2, and a cos 2c remains as cos 2c for now. So this is 2 cos of a plus b into cos of a minus b. And a plus cos 2c. But we know that a plus b is 3 pi by 2 minus c. Taking cos of both the sides, cos of a plus b is cos of 3 pi by 2 minus c. Now n odd है, तो ये sin c हो गया. And 3 pi by 2 minus c will lie in the third quadrant. Cos in the third quadrant is negative, तो ये minus हो जाएगा. So this will end up becoming minus 2 sin c into cos of a minus b plus. अच्छा, cos 2c को we can write as 1 minus 2 sin square c. ठीक है, cos square minus sin square, and cos square को 1 minus sin square कर दिया. तो from this and this we take minus 2 sin c common. ब्रैकेट में आ जाएगा cos of a minus b plus sin c, है ना, +1 जो अलग ही है. देखो, is everyone able to follow till here? I hope everyone's okay till here. Yes, sir. Then we do a minus 2 sin c and cos of a minus b, and we put the value of sin c back. So what was sin c? Sin c was minus of cos of a plus b. तो अब ये बन गया cos of a minus b minus cos of a plus b, which is the formula for 2 sin a sin b. So 4 sin c into sin a sin b and a plus 1. So the answer for this would be 1 minus 4 sin a sin b sin c, which was option D in the sheet. Is everyone clear with this? सर हाँ बोलो सार्थक. सर असाइनमेंट का एक बार क्वेश्चन नंबर 27 कैसे करना है वो भी एक बार दिखा दीजिए ना. 27. हाँ सर. ओके, 27 भी डिस्कस कर लेते हैं. ये भी एक्चुअली काफी लोगों ने पूछा था. यस. सो ये 26 था, आई थिंक असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 26 था. हाँ सर. ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन 26. ओके, क्वेश्चन 27.
cos of 6x plus 6 cos 4x plus 15 cos 2x plus 10 whole divided by cos 5x plus 5 cos 3x plus 10 cos x. इसका वैल्यू निकालना है. So this was actually again a very simple, just a simple manipulation based question, which is rewrite the numerator in this way: cos 6x plus cos 4x. तो अपने पास 5 cos 5 4x बचा, तो 5 cos 4x प्लस 5 cos 2x, 5 तो कॉमन ले लिया है, सो प्लस cos 2x. अब अपने पास 10 cos 2x बचेगा, तो उसको कर दिया 10 कॉमन लेके 10 cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाय cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x. अब न्यूमरेटर में पहला ब्रैकेट cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos 6x माइनस 4x बाई 2, तो cos x हो गया. सेम थिंग सेकेंड वाले में cos c प्लस cos d अगेन, तो cos ऑफ 4x प्लस 2x 6x बाई 2 3x इंटू cos ऑफ 4x माइनस 2x बाई 2 cos x प्लस 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, तो ये 20 cos स्क्वायर x हो गया होल डिवाइड बाई cos 5x plus 5 cos 3x plus 10 cos 2x. Now all you have to do is take 2 cos x common from the numerator. तो इसके ब्रैकेट में आ जाएगा cos 5x. अच्छा यहाँ पे भी तो ये इंटू 2 होगा ना, फॉर्मूला लगा है. 5 cos 3x plus 10 cos x डिवाइड बाई बेसिकली द सेम थिंग डिनोमिनेटर में cos 5x plus 5 cos 3x plus 10 cos x. So ये कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट गिव्स अस द आंसर एज 2 cos x. क्लियर? हाँ सर. सर नंबर 25 भी डिस्कस कर सकते हैं. 25 25 sin 12 sin 48 sin 54. यस. तो अब sin 54 का तो वैल्यू भी बता ही दिया, ठीक है. तो आई जस्ट टेल यू कैसे करना है. 25 वुड बी sin 12 इंटू sin 48 इंटू sin 54 है, तो पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 सो दैट 2 sin 12 48 का फॉर्मूला बन जाएगा. तो अब 2 sin a sin b फॉर्मूला, एनीवन? 2 sin a sin b फॉर्मूला. 2 sin a sin b is cos of a minus b, so 48 minus 12 36 minus cos of a plus b 48 plus 12 60 into sin 54 होल डिवाइड बाई 2. अब इसमें सबका वैल्यू प्लग इन कर दो. cos 36 का वैल्यू पता है, cos 60 का वैल्यू पता है, sin 54 का वैल्यू पता है, सब प्लग इन कर दो बस. cos 36 is root 5 plus 1 by 4, cos 60 is half, and sin 54 is basically root 5 plus 1 by 4 again. अब तो हो जाएगा. यस सर. Okay. Okay, then we do a couple of more questions. Few more questions on this.
Okay, next question, write down. If sine power 4x by 2 plus cos power 4x by 3 is 1 by 5, find the value of tan square x. सर ये साइन 4x है या फिर साइन Sine पावर power 4, 4x? sine power. Let me write it as sine power 4x by 2 plus cos power 4x by 3 is 1 by 5. Find the value of tan square x. Actually, there are two parts to this question. You have to find out the value of first part mein you have to find out the value of tan square x, and second part mein you have to find out the value of sine to the power 8x by 8 plus cos to the power 8x by 27. दो पार्ट का क्वेश्चन है ये. Okay, well, for solving questions of this form, generally, if we have sine power 4, cos power 4 wale terms, so what we do is, let's say we let sine square x as t. Okay, sine square x ko t le lo. So this equation will become t square by 2 plus, cos power 4x. Now, if sine square is t, what would be cos square? Cos square हो जाएगा 1 minus t. So cos power 4 would be 1 minus t whole square by 3 is equal to 1 by 5, which if you realize now will actually end up becoming a quadratic in t. Okay, so convert this whole thing as a quadratic in t. So this would be t square plus 1 minus 2t by 3 is equal to 1 by 5. Take the LCM. So 3t square plus 2t square plus 2 minus 4t whole into 5 is equal to 6. तो 15. अच्छा इसको कैंसिल कर दो यहाँ पे. सॉरी कैंसिल तो नहीं होगा. 6 था यहाँ पे. सॉरी 15 रख दिया. सॉरी. तो विल हैव 15t स्क्वायर. अच्छा 3 plus 2 5 5 25 हो गया ना. Okay, क्लब करके लिख दो. तो 3 plus 2 5 into 5 25t स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20t. और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 5 into 2 10 10 minus 6 4 is equal to 0. देखो ये आ रहा है क्या सबका. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then find t from here. Sir, t is 2 by 5. This expression can actually be written as, देखो इस फॉर्म में 5t whole square minus twice into 5t into 2 plus 2 square is equal to 0. देखो ये दिख रहा है.
So which is like saying 5t minus 2 whole square is equal to 0. Therefore t क्या आ गया? T is 2 by 5. So this implies sine square x is 2 by 5. So in that case, how much would be cos square x? 3 by 5. 3 by 5. तो tan square कितना हो गया? 2 by 3. तो tan square is 2 by 3. अब सेकंड वाले पार्ट का वैल्यू निकालो. Find the value of the second part. Sir, 1 by 125 आएगा. 1 by 125. Yes, sir. हाँ सही है, करेक्ट है. The second part should come out to be 1 by 125. Is everyone clear with this? Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्लास 10 का क्वेश्चन है. If theta lies between 0 to pi by 4. If theta lies between 0 to pi by 4, such that T1 is tan theta to the power tan theta, T2 is tan theta to the power cot theta, T3 is cot theta to the power tan theta, and T4 is cot theta to the power cot theta. Arrange T1, T2, T3, T4 in the ascending order. Arrange T1, T2, T3, T4 in ascending order. Anyone? Solution? That T2 less than T3 less than T1 less than T4. Okay, check करते हैं. अगर if theta lies between 0 to pi by 4, तो मतलब क्या हो गया? 45 के नीचे है. Theta is less than 45 degrees, which would imply tan theta will be a value less than 1 and cot theta will be a value greater than 1. Okay. So T1 is a value less than 1 raised to the power a value less than 1. T2 is a value less than 1 raised to the power a value greater than 1. T3 is a value greater than 1 raised to the power a value less than 1. Whereas T4 is a value greater than 1 raised to the power a value greater than 1. ठीक है, ऐसे इंटरप्रेट करना है बेसिकली. Now, what happens to a value which is less than 1 raised to the power of less than 1?
this value और छोटा हो जाता है उससे, लेस देन 1 ही रहता है। लेस देन 1 रहेगा, पर छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। सपोज वी हैव अ 1/4 टू द पावर ऑफ हाफ, यही तो हुआ ना, लेस देन 1 टू द पावर लेस देन 1। पर 1/4 टू द पावर हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ, तो वैल्यू तो इंक्रीज कर गया ना। इज एवन एबल टू फॉलो दिस एग्जाम्पल? हाँ सर। ठीक है, so using this example what we say is t1 will be a value which is slightly less than 1। ठीक है, slightly less than 1। अच्छा, t2 के लिए क्या होगा? So a value less than 1 raised the power a value greater than 1। तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/16 हो गया, तो और बहुत छोटा डिक्रीज हो होगा। जाएगा। जाएगा सर, छोटा। So t2 will actually become much less than 1, ये तो और डिक्रीज कर गया। ठीक है, अच्छा t3 के लिए एग्जांपल लो। तो 4 टू द पावर हाफ कर दिया, तो ये आ जाएगा कितना? 2। तो वैल्यू रिड्यूस करेगा पर 1 से बड़ा ही रहेगा। सो t3 वुड बी लाइक स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक है, वैल्यू तो रिड्यूस किया है पर अभी भी 1 से बड़ा ही रहेगा। एंड व्हाट विल हैपन टू t4? बहुत बड़ा। ये तो 4 का स्क्वायर टाइप्स हो जाएगा। सो t4 विल एंड अप बिकमिंग अ वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 1। तो व्हाट वुड बी द असेंडिंग ऑर्डर इन दिस? सो t2 सबसे लीस्ट, followed by t1, followed by t3, and the largest out of this would be t4। Isn't clear with this? सर एक बार ये होमवर्क वाला पीडीएफ में 18 नंबर समझा देंगे? कौन सा? 18 नंबर। 18 नंबर? tan 25 वाला? यस सर। Question number 18 is like, if tan 25 degrees is equal to x, then we have to find the value of tan 155 minus tan 115 by 1 plus tan 155 into tan 115। तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में तो है।
पर इसको 25 के टर्म्स में डालना है। अगर अपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे तो 155 माइनस 150 40 के टर्म्स में आ जाएगा ये, पर 40 का वैल्यू दिया है, 25 का वैल्यू दिया है। ओके, तो ऐसे इसको चेंज कर देते हैं फिर। tan 155 कैन बी रिटन एज tan ऑफ 180 माइनस 25 माइनस tan ऑफ 115 को कर दिया 90 प्लस 25। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पे कर दिया, डिनोमिनेटर भी तो है, डिवाइड बाई सेम चीज इधर कर दो, तो 1 प्लस tan ऑफ 180 माइनस 25 इंटू tan ऑफ 90 प्लस 25। ये स्टेप क्लियर है? यस सर। नाउ व्हाट बी tan ऑफ 180 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, and tan of 90 plus theta is cot theta, so ये प्लस cot 25 हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये भी सेम चीज हो जाएगा, तो ये 1 माइनस और माइनस प्लस ही रह गया, tan tan 25 इंटू cot 25, tan 25 इंटू cot 25। तो अब बस वैल्यू प्लग इन कर दो, तो दिस इज 1 बाई एक्स, tan 25 हो गया 1 बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, सो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2x, ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा चलो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ट्रू और फॉल्स, ठीक है, अगेन आई राइट डाउन अ फ्यू स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू टेल मी वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। साइन ऑफ 1 रेडियन इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ 1 रेडियन, साइन ऑफ 2 रेडियंस इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ 2 रेडियंस, साइन ऑफ 3 रेडियंस इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ 3 रेडियंस, साइन ऑफ 4 रेडियंस इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ 4 रेडियंस, साइन ऑफ 5 रेडियंस इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ 5 रेडियंस, sine of 6 radians is greater than cos of 6 radians, and sine of 7 radian is greater than cos of 7 radian. Which of the following statements are true? Which of the following are false? So suppose we have the circle. The first three are true. All is false. ठीक है, लेट्स से सर्कल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अच्छा एक बात बता दो, when does sin theta become equal to cos theta? At 45. अच्छा, एक तो 45 डिग्रीज पे होता है, डज इट एवर हैपन अगेन? At each multiple of 5/4. वेल इन दी ऑन द सर्कल इट हैपेंस ट्वाइस, एक होता है 45 डिग्रीज पे और एक होता है 225 डिग्रीज पे, थर्ड क्वाड्रेंट व्हेन sin थीटा cos थीटा बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, सो विच इज लाइक समथिंग ऑफ दिस फॉर्म, सपोज दिस इज 45 degrees and then the same line extended backwards this would be 225 degrees। देखो ये क्लियर है, this is the boundary of sin equal to cos। ठीक है, now every angle that lies above this line, ये जैसे ये वाला हाफ जो है, this half of the circle पूरा,
This is the jungle of sine. Okay. And everything below that line, this is the territory of cos. Okay. For any angle lying above this line, sine will be greater. For any angle lying below this line, blue वाला region में, cos would be greater. ये याद रखना है. ठीक है, it's a very simple thing. Sine is equal to cos at 45 and 225. So we draw that line. The line is a diameter. We'll divide the circle into two halves. The upper half belongs to sine. The lower half belongs to cos. Is everyone okay with this? Yes, sir. So now, where will 1 radian lie? How much is 1 radian? Sir, 57.3 degrees. 57 degrees. तो कहाँ पे लाई करेगा? अपर वाले हाफ में. So sine 1 radian would be greater than cos 1 radian. True. Sine 2 radians is greater than cos 2 radians. True. 2 radians second quadrant में. 3 radians. True. Be True, second sir. quadrant में. Now how much would be 4 radians? So 57 into 4. 268 degrees. अरे 57 into 4 कर रहे हैं भाई. अच्छा सॉरी. 228 कितना आया? 228 228. अब 228 will slightly overshoot 225 degrees. तो साइन की कॉस की टेरिटरी में आ गया. तो अब कॉस वुड बी ग्रेटर. 5 रेडियंस कॉस की टेरिटरी में, 6 रेडियंस कॉस की टेरिटरी में. अच्छा, व्हाट अबाउट 7 रेडियंस? तो क्वाड्रेंट 1 में होगा. 7 रेडियंस का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 57 into 7, 350 plus 49, 399 399. तो 399 में 360 तो यहाँ निकल गया. बचा कितना? 39. 39. तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रह जाएगा बाउंड्री पे 39. So still cos would be greater. सर अगर वो इक्वल टू आ जाता तो cos Was everyone able to understand this? हाँ सर. ठीक है, simple things. सर अगर वो इक्वल्स टू हो जाता साइन और cos के तो cos हो जाता. अगर वो क्या? अगर साइन और cos इक्वल हो जाता मतलब ये लाइन पे लाई करता वो पॉइंट. हाँ, इक्वल है तो लाइन पे लाई करना होगा. ठीक है, तो जो फिर बाउंड्री बनाया है इक्वालिटी हमेशा उस पे ही होगा. सर ये दो एंगल छोड़ के किसी पे भी इक्वल नहीं हो सकता क्या? कौन सा एंगल? 45 डिग्री और 225 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पे इक्वल नहीं होता क्या साइन और कॉस? नहीं, नेवर. मतलब ऑब्वियसली 45 एंड 225 आर एंगल्स इन द फर्स्ट रेवोल्यूशन. हाँ अब अगर इसको सेकंड रेवोल्यूशन में चले जाएंगे लाइक 360 प्लस 45, 360 प्लस 225 या 720 प्लस 45, हाँ 720 प्लस 225 रेवोल्यूशन में, तो फिर इनफाइनाइट एंगल्स आएगा ना. हाँ हाँ. But in a given revolution, जैसे if we only consider the first revolution 0 to 360, तो 0 to 360 में 45 and 225 are the only angles जहाँ पे sin will become equal to cos. हाँ सर ठीक है. सर आप एक बार रूल रिपीट कर देंगे क्या, लाइक 45 से अगर ग्रेटर होगा एंड तो फिर साइन वाला चीज. हाँ, 45 से if an angle on the circle lies above this dividing line, तो sin will be dominant. मतलब sin का value would be greater. And if an angle lies below this dividing line, ठीक है, blue वाली region में, then cos would be greater. ओके सर, थैंक यू. Okay.
सर डीपीपी का एक क्वेश्चन में डाउट है। करते हैं एक एक क्वेश्चन पहले। राइट आउट क्वेश्चन, एक काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल PQR, थ्री साइन P plus 4 cos Q is equal to 6 and 4 sin Q plus 3 cos P is equal to 1. Then find the angle R. Find the angle R. It's again equation वाला क्वेश्चन है ये। If PQR are the angles of a triangle, okay, PQR are the angles in the triangle. So I'll give you a hint. Square and add. It's an equation question only, that the one that we started the session with. An application of those only. So let's say we square the first equation, so that will give us 9 sin square P plus 16 cos square Q plus both is a 12 to the 24 sin P cos Q is equal to 36. And similarly, we'll have 9 cos square P plus 16 cos square Q plus both is a 12, 24 cos Q sin P is equal to 1. सर So नीचे we वाले में 16 add them साइन up स्क्वायर together. क्यूब 9 plus 16 plus 24 times sin P cos Q plus cos P sin Q. अच्छा cos P sin Q होगा। cos P सर sin उसी में पहले में साइन
साइन स्क्वायर क्यों होना चाहिए था? हाँ हाँ, राइट 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 राइट। साइन स्क्वायर क्यू, कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे साइन क्यू हो गया इज इक्वल टू 37। सो अब साइन पी कॉस क्यू प्लस कॉस पी साइन क्यू होगा साइन ऑफ पी प्लस क्यू। So we end up getting sine of P plus Q is equal to 37 minus 25, 12 by 24, half. So now if sine of P plus Q is half, what would be P plus Q? 30. If sine of P plus 30. Q is half, तो P plus Q कितना हुआ? 30. 30 sir, 30. Again, फिर वही silly mistake that I have mentioned in the class so many times. Please do remember, तुम लोग class 11 में upgrade हो चुके हो. In the question, is there any mention of the quadrant in which P and Q lie? It is mentioned that P and Q are the angles of a triangle. And since they belong to the angles of since they are the angles of a triangle, what is the range that they can have? 0 to 180. Right angle triangle nahi hai. It's just a general triangle. So which means P plus Q can be 30 degrees or 150 degrees. दोनों possible है, not just 30 degrees. Is everyone okay with this? Yes, First sir. quadrant, second quadrant. Sine है, साइन पॉजिटिव है, साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट, तो दो आंसर्स निकलेगा. अब इन दोनों में से सेलेक्ट करना होगा द करेक्ट वैल्यू. वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? वो ऐसे करेंगे, लाइक सपोज वी हैव केस वन which is P plus Q is 30 degrees. So that means P is less than 30 degrees and Q is less than 30 degrees as well. ये दोनों ऐड होके 30 हो रहे हैं, तो दोनों को 30 से तो कम ही होना होगा. So which would imply sin P is less than half. Yeah. And ठीक है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन चेक करो. जो फर्स्ट इक्वेशन है, सर हाँ हेलो, हाँ बोलो अक्षिता. सर ये 150 होगा कि 120? 150. सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है ना. अलाइड एंगल ऑफ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस थीटा. अच्छा ओके सर, समझ गई. रिमेंबर फर्स्ट क्लास में अपने किए थे, अलाइड एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस थीटा. यस सर. तो इसलिए पाई माइनस 180 माइनस 30 करके 150 लेंगे. तो इफ p इज लेस देन 30, साइन p वुड बी लेस देन हाफ. अब जो पहला इक्वेशन है विच इज लाइक साइन p, साइन p प्लस 4 कॉस q इज इक्वल टू 6. तो साइन p का मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू भी अगर अपने पकड़ के चलते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? हाफ. तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 4 कॉस q इज इक्वल टू 6, अगर मैक्सिमम भी अगर पकड़ के चलते हैं तो, विच इज 4 cos q माइनस इज इक्वल टू 6 माइनस 3/2. तो हो जाएगा 6 माइनस 3/2 हो गया 12 माइनस 3, 9/2. अब 9/2 कितना होगा? 4.5. या ऐसे भी रख दो, 9 4.5 नहीं भी करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, विच मीन्स cos थीटा इज 9/8.
Now, can cos theta be 9/8? नो सर। Why so? क्या प्रॉब्लम है? सर तो कॉस का मैक्सिमम रेंज ही 1 है। प्रॉब्लम ये है that we had discussed cos theta will always be a number lying between -1 to 1. Cos theta can never be greater than 1. But 9/8 is a value greater than 1, which means this is not possible. Cos q tha, not theta, sorry. Which means this is not possible. So that means the case 1 is invalid. Case 1 will not satisfy the first equation. So case 1 is invalid, implying P plus Q is 150, and therefore, how much would be R? 30। R is 30 degrees. That will be the correct answer. R is 30 degrees. I guess the first part of the calculation was simple, so it is easier to understand. But more importantly, were you able to understand the second part? Especially the case 1 wala part. Yes, sir. Okay. Okay, then let's say we'll stop at this for today. I hope everyone was clear with all the questions that we have done today.